talking about emotional healing, right? We are removing out one pain. निकाल दिया अपनी जिंदगी से once and for all. All of us have got emotional pain, right? We are all having some pain or the other in our lives. Childhood से बचा बचा के, उगा उगा के, बड़ा बड़ा के, नर्चर करके हमारे साथ में रखा हुआ है, तो उसको हम एक एक करके निकाल रहे हैं every Sunday, right? Now when we are talking about इमोशनल पेन तो सबको पता है. अभी इमोशनल पेन जब हम बोलते हैं, what is involved in it, what all comes into it? Not just hurt, it also deals with memories, right? Now whatever it is all based on something that has already happened, right? कुछ तो हुआ है yesterday, day before yesterday, या कभी तो भी in the past. You cannot change what has happened, but what you can change is how you are associating yourself with it. What are your thoughts about it? What are your feelings about it? And what are your memories about it? Right? वो जो हम संभाल के हमारे पास रखे हैं, that is the one that is causing the pain. It is not that incident that is causing the pain. It is how we are associating ourselves with it that is causing the pain. Right? And how we associate ourselves with it? With thoughts. Memories are also a part of thoughts, so we associate it with thoughts. Now, when we are associating it with thoughts, those thoughts are causing some emotions in us. And usually, the questions that will be associated with those thoughts will be what? Is whatever happened, was it unexpected? Or was it expected? जो हुआ वो होना था, एक्सपेक्ट किया था होने के लिए, या वो अनएक्सपेक्टेड था, सोचा भी नहीं था कि ऐसे होगा. Another is जो हुआ वो एंजॉयबल था कि नहीं था. वो नहीं था इसीलिए वो पेन बन गया है. अगर वो एंजॉयबल होता तो वो पेन नहीं होता, वो खुशी होती, हैप्पीनेस होता, associated with a memory. So that was not enjoyable. Then whatever happened, is it blocking me to get what I want? Or is it helping me to get what I want? वो एक थॉट आता है, वो नहीं हुआ होता ना तो मैं ये कर जाता, मैं ये कर जाती, मैं ये पा लेता, मैं ये पा लेती. वो नहीं होता तो. So we are associating it as blocking something which we could have otherwise got in our lives. Right? So वो जो sense of loss होता है, that is also causing us pain. Right? Then the question comes, the thought comes, can I control what will happen next? इसके बाद आगे क्या होगा? Can I control it or not? मैं कंट्रोल कर सकूंगी कि नहीं? ये ऐसा ही चलता जाएगा. Right? So when we are talking about controlling, what are we talking about? Trying to change something. Right? If you are able, if you do not like it, you want to change it. If you like it, then you are happy with it. ऐसा ही रहने दो, मैं खुश हूं. But because you don't like it, you want to change it. Then another thought that gets associated with that is, can I cope up with what has happened? जो भी हुआ है, मैं उसके साथ cope up कर सकती हूँ कि नहीं? Cope up कर सकता हूँ कि नहीं? Cope up means what? Adjusting, compromising, accepting that I am agreeable to live with this. Right? I'm adjusting to this change and I'm agreeable to that adjustment. और थोड़ा सा बुरा लगता है लेकिन ज्यादा बुरा नहीं लगता, ठीक है, चल जाएगा. That is adjustment. बिल्कुल नहीं चलेगा means you cannot adjust, right? Absolutely unacceptable.
ये एक थॉट होती है हमारी। देन दूसरा एक थॉट आता है कि वॉट एवर हैपेंड, does it match or does it agree with my thought of what is right and wrong? हम सब का एक सही गलत होता है। Everybody has something that is right and something that is wrong. हमारे एक सेट प्रिंसिपल्स होते हैं, हर एक के थोड़े थोड़े अलग होंगे। Like for example, a vegetarian has a set thing of right and wrong. I will eat veg food, that is right. Non-veg food is not right, is wrong. राइट। नॉन वेजिटेरियन के लिए क्या है, वेजिटेरियन फूड भी चलेगा, नॉन वेजिटेरियन भी चलेगा, दोनों राइट है। राइट, लेकिन नॉन वेज में मैं ये नहीं खाऊं, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं बीफ नहीं खाऊंगा या मैं पोर्क नहीं खाऊंगा, लेकिन बाकी सारे नॉन वेज में खाऊंगा। तो वो एक्सेप्टेबल होता, हर एक का राइट एंड रॉन्ग अलग है। ये अभी एक एग्जाम्पल है दैट आई गिव अबाउट फूड। हर एक चीज में इस तरह से एवरीबडी हैज गॉट व्हाट इज एक्सेप्टेबली राइट फॉर देम एंड व्हाट इज एक्सेप्टेबली रॉन्ग फॉर देम इन सर्टेन थिंग्स, राइट। So whether what I am accepting as right and wrong, does it match with this? कि मैं बोलती हूँ बहुत गलत हुआ है, but does it match with that? और या I say सही हुआ है, but does it match somewhere inside me my sense of wrong के साथ वो क्लैश होता है कि नहीं है? Then एक क्वेश्चन आता है कि मेरी कोई गलती है, मेरी कोई गलती से ये हुआ है या किसी और की गलती से हुआ है? ज्यादातर से हम क्या कहेंगे, उसकी गलती से हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम हमारी गलती तो देखते नहीं है, राइट। जस्ट लाइक हमारा बैक ऑफ आवर हेड हमें खुद को नहीं दिखता है, बाकी दुनिया को दिखती है। उसी तरह से हमारी गलती हमको नहीं दिखती है, बाकी दुनिया को दिखती है। ये हर एक के साथ होता है, राइट। सो द क्वेश्चन कम्स दैट इज इट बिकॉज ऑफ माई फॉल्ट और इज इट बिकॉज ऑफ somebody else's fault, right? Now when we are looking at it in this manner, when something is happening we feel a different emotion, एक अलग सा इमोशन होता है डिपेंडिंग ऑन हाउ आवर माइंड इज आंसरिंग दीज क्वेश्चंस। और अगर हमारा आंसर नेगेटिव होता है दैट मीन्स इट इज अ इमोशन दैट इज गोइंग टू गिव अस पेन और दैट इज गिविंग अस पेन और दैट इज हर्टिंग अस। We are splitting the hair here to understand emotions. Emotional pain बहुत generalize करके बोलते हैं, लेकिन क्या होता है वो और उससे कैसे डील करना है, that is how we are looking at it, right? Because we are doing this meditation for emotional pain. तो इमोशनल पेन क्या है वो समझना ही तो आना चाहिए, व्हाट इज इट वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। बड़े बड़े पेन्स तो होंगे, सबके बड़े बड़े पेन्स होंगे, छोटे छोटे भी होंगे। तो वी हैव टू बाइफरकेट। बड़े बड़े पेन्स जाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, इतनी जल्दी आसानी से नहीं जाएगा, काफी सेशंस लेने पड़ेंगे और कभी कभी ट्रीटमेंट भी लेना पड़ता है, थेरेपी ट्रीटमेंट भी लेना पड़ता है। छोटे छोटे पेन्स और मीडियम साइज के पेन्स सब फटाफट हमारे ये फ्री वेबिनार सेशंस में जाते रहेंगे, राइट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड बाइफरकेट दिस। कभी कभी छोटी छोटी चीजें जो है हमें लगता है वो छोटी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इट हैज मेड सच अ ह्यूज इम्पैक्ट इन अस, हमें भी पता नहीं है वो हमें कैसे इफेक्ट कर रहा है। आई विल show you how the brain triggers. Now like I said, we have different emotions. Now sometimes our brain will trigger an emotion even without our noticing it. हमारे नोटिस में भी नहीं आएगा, लेकिन somehow somewhere हमारी ब्रेन अनकॉन्शियसली एक ट्रिगर मार देता है, and that will create an emotional reaction in us. When this emotion is triggered, it creates an emotional reaction in us, and those changes that automatically happen during this emotion, like changes in what our body is doing, changes in our thoughts, changes in how we want to act, all those things get triggered. Very simply, we can say that
Where sorrow is concerned, आंसू आते हैं, tears come to our eyes. Happiness is concerned, smile आता है. या तो फिर कभी कभी हार्ट पाउंड होता है एक्साइटमेंट से, डर होता है तो वापस हार्ट पाउंड होता है डर से, ब्रीथिंग फास्टर होने लगती है हमारी. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन आवर बॉडी. हमारे शरीर में ये असर दिखता है, हम नोटिस भी नहीं करते हैं, लेकिन ये होता है. और ये जो चेंजेस हो रहा है, इट इज ऑल्सो मूविंग टू आवर ऑर्गन्स, affecting our organs, affecting our muscles, affecting our bones, affecting every cell. और every cell में भी ये memory record होता है, ये instance, ये experience record होता है. We may not notice it, but our body, every cell is noticing it. And every cell becomes conscious of it, and our every cell remembers it. And then it stores that experience. And another similar experience happened, that also gets stored on it. तो इस तरह से हमारा भंडार बढ़ता जाता है. Right? We keep increasing it. And these reactions will also then trigger similar memories. एकदम similar memories कुछ रहेंगे, वो भी फिर ट्रिगर होने लगता है. And all those store करता है. Right? Now, when they get aggravated, then it either gives us good things or bad things. अगर pain है तो bad things, good memories, happiness है तो good things. अच्छा स्वस्थ हो जाता है, happiness होता है. और pain है तो स्वस्थ हमारा बिगड़ने लगता है, health issues होने लगते हैं. Right? So all of us will be having some health issues or the other. And most of these health issues are all because of our thoughts that is handling all these things, events, emotions that is happening over there. Right? Now, even before we think about it, our emotions get triggered. Like for example, आप चल रहे हो, suddenly आपके सामने शेर आता है. A lion comes in front of you. Right? You will immediately run. Immediately you will run away from there, and after you run away from there, then you will think and realize, oh, I was scared. हमारा क्या हुआ है, रिएक्शन पहले हुआ है, ब्रेन ट्रिगर कर दिया है फियर को, और हमने भागना शुरू कर दिया. वी स्टार्टेड रनिंग. द ब्रेन ट्रिगर्ड द फियर एंड वी स्टार्टेड रनिंग. बट आर वी थिंकिंग व्हेन वी आर रनिंग ओवर देयर, ओ आई एम स्केर्ड, ओ आई एम स्केर्ड? नो. हमारा सोच बंद हो जाता है, हम एक्शन करते हैं, उसके बाद में यू थिंक एंड यू से, माय गॉड, आई वाज सो स्केर्ड. Isn't it? Right? Now, what happens is that emotion, that expression, that reaction was triggered off even before we realize it. So many times the brain in such manners triggers of things in an unusual manner without even our realizing it. Right? Our thoughts move very fast. फास्टर देन वी कैन थिंक. एक थॉट खत्म नहीं होता है कि दूसरा शुरू होता है, कि वो खत्म नहीं होता है कि तीसरा शुरू होता है. दे मूव वेरी फास्ट. दैट इज व्हाई इफ यू ट्राई टू राइट डाउन योर थॉट्स, यू विल नेवर बी एबल टू कोप अप विद इट, बिकॉज योर थॉट्स आर ऑलवेज मूविंग फास्टर देन योर एबिलिटी टू cope up with it, or ability to grasp it, or ability to put it down or deal with it. Like, let us say, deal with it. Right? So how can you understand these emotions, and how can you figure out what is the best way to deal with it? That is, you need to practice reappraisal. What we need to practice? Reappraisal. That is, notice what thoughts we are having in a particular situation. Then try to find another way to think about that situation that might make us feel better. ये सिचुएशन है, उसे नोटिस करो, अवेयर हो जाओ. हमारी अवेयरनेस लेवल बहुत लो हो गई है. इन द फास्ट पेस्ड लाइफ दैट वी लिव, अवेयरनेस लेवल हैज बिकम वेरी लो. सो बी अवेयर and notice
how our thoughts are moving in a given situation. And then try to find another way to think about it. Let me give you an example. Yesterday you got 25,000. Okay. Today you had to spend 20,000 rupees on something. The first thought that may come to you is that कल ही मिला था और आज खर्चा हो गया. That's a very common way of thinking, normal way of thinking. I just got the money yesterday and today I had to spend it. Now rewire yourself, reprogram yourself to think about this situation in a different way, in a positive manner. That will make you feel better. We can also look at the same situation and say, I had to spend this 20,000 today, and I was fortunate that I got the 25,000 yesterday. So that 25,000 I got yesterday helped me to take care of my today's need. So you're looking at it in a positive manner. Rewiring yourself to look at it in a different way that makes you feel good about the situation and not bad about the situation. Now, if you think that I just got it yesterday and it got over today, it got spent today, then you are looking at it in a negative way, in a negative manner, right? And that will make you start feeling sad. It will create a negative impression upon you, right? Now, if you look at it in this manner that I suggested, that I had this need today. So yesterday, universe gave me that money that could take care of my today's need, and I still have 5,000 balance with me. Oh, I'm so happy. 25,000 मिला, 20 गया, लेकिन 5 अभी भी मेरे पास है. So be happy about it and smile. Look at it in a positive manner. So what this involves is trying to change our thoughts, rewiring our thoughts and trying to change our thoughts. So we can also use techniques to distract ourselves from that situation and do something else in the meanwhile, so that moment का जो वो negative thought है वो चला गया. We get time to then look at it constructively in a productive manner. We get time to then look at it differently in a positive manner. तो नेगेटिविटी हमें इफेक्ट नहीं होता है. But the more we start dwelling on the negativity, the more it will start affecting us. So that is one thing we need to understand, that we have to try to dwell on negativity as little as possible. Now this requires a lot of practice. एक दिन में यूं नहीं होने वाला है, एक situation में यूं नहीं होने वाला है. We'll have to practice it several times. Practice करते रहो, धीरे 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 हमारा thought process switch हो जाता है from negative thought process to positive thought process. कोई negative बोलेगा तो भी आप बोलेंगे रुको, ऐसा सोचो. Automatically वो thought processes हमारे ऐसे बनने लगेंगे. Automatically our thoughts will learn to think only positively. For that, we need to do a lot of practice. We can use techniques also, and like meditation, etc., which helps us to strengthen those positive thoughts within us. And when you're busy elsewhere, your thoughts will not go there, so you can distract yourself. And this becomes easier and easier the more you practice. You learn how to control your emotions instead of your emotions controlling you. हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल में रखेंगे, हमारे काबू में रखेंगे, नॉट आवर इमोशंस हमें उसके काबू में रखें. दैट इज वी डोंट फ्लो विद द इमोशंस. हम समभाव रख सकते हैं. दिस इज हाउ वी डेवलप अ फीलिंग ऑफ बीइंग इन समभाव and thinking only positive and looking only at the positive aspects of it. Once we understand this aspect of emotions, then it becomes easy for us to analyze events in our life and how to heal it and what to do to heal it.